But to get Karthik and also Amruta to speak about it for Yeah. just a minute, and they should all speak only nice things about me. Let's make that very clear. Amruta, please. So लेकिन ये आप नहीं भी बोलते तो हम मतलब because that is everyone asks me कि आपने पहले ये फिल्म जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आपने क्या मैंने कहा यार राम सर बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैड सीन नीरजा एंड आफ्टर दैट व्हेन आई रियलाइज्ड कि आप किस तरह से शूट करते तो आपने अभी समझाया सर तो उसमें ही थोड़ा ऐड करके इट्स लाइक नाटक मतलब 45 मिनट्स का टेक होगा तो आप बीच में रुक नहीं सकते वी हैव टू जस्ट नो वन कैन से कट कट मेरा यार ये भूल गई हूँ वो भूल गया हूँ ऐसा नहीं हो सकता सो आपको पूरा 45 मिनट्स तक वो चैप्टर पूरा होने तक आपको पूरा टेक देना है ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था और मैं चूँकि नाटक से करके यहाँ आई हूँ तो मेरे लिए बहुत ही मैं बहुत मुझे मज़ा आया कि बाद में क्लोज करते वगैरह कुछ नहीं सारे फ्लो में एक साथ वो हो गया कई मज़ेदार चीज़ें भी हुई जैसे मुझे याद है कि एक मेरा सीन था जिसमें मैं दवा लेती हूँ एंड वो बीच में आता है तो मैंने वो गोली डाली मुंह में मैंने पानी पिया एंड द सीन वॉज गोइंग ऑन एंड इट वॉज क्लाइमैक्स सो एवरीवन वॉज टेंस और सीन चालू है अचानक मेरी गोली अटक गई गले में तो सबको लगा मैं एक्टिंग कर रही हूँ आई एम लाइक मैंने ऐसे किया सो एवरीवन इज लाइक वाओ वाओ मतलब सबको लग रहा है क्या वर्किंग किया है और मेरी जो टीम थी आसपास की तो उनको पता चला क्या हो रहा है बिकॉज दे आर लुकिंग एट मी और मैंने उनको ऐसे किया यू नो और ये सब हम देखते हैं तो आई एम लाइक तो लाइक एवरीवन इज लाइक क्या एक्टिंग है भाई क्या एक्टिंग हो रहा है एंड आई एम लाइक एंड देन बट द शो मस्ट गो ऑन एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम थिएटर आई एम लाइक यू नो आई हैव टू पुल दिस ऑफ एंड देन मैं पानी पी रही हूँ और फाइनली मेरा डायलॉग का क्यों आया तब तक कार्तिक के डायलॉग्स चल रहे थे एंड कार्तिक भी ऐसे बोल के मेरी तरफ देख रहा है मैम तो उसको लग रहा है कि कुछ क्या है ये अच्छा कर रही है लेकिन क्या ये क्या कर रही है मतलब यू नो बिकॉज इट इज नॉट डिसाइडेड इट वाज नॉट डिसाइडेड बट यू हैव टू पुल इट ऑफ एंड देन आफ्टर द शॉट मैं इरिटेट भी हो गया था एक पॉइंट पे इतना जोर जोर से खांस रही थी मेरे डायलॉग नहीं सुनाई दे रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये हो क्या रहा है ये कोई तो रोको बट या एंड राम सर वाज इन टू माइंड्स कि ये क्या है तो वो शॉट हो गया और उसके बाद कट के बाद सबने कहा वेरी नाइस तो आई वाज लाइक वो एक्टिंग नहीं था भाई मुझे सचमुच हो गया था बट देन आई थिंक यूनिवर्स कॉन्स्पायर्ड एंड वो शॉट बहुत आप देखेंगे वो बाद में कि वो शॉट ने बहुत कुछ ऐड किया है इस रोल में लेकिन मुझे ये सचमुच टिपिकली बोलते हैं लेकिन मुझे बोलना है कि वो जो कुछ ऐड किया वो यूनिवर्स ने और बाकी सब कुछ जो है वो राम सर ने किया है ऐसे मुझे लगता है थैंक यू राम सर एक एक्टर ने एक्टिंग के लिए तो जान तो देनी चाहिए मतलब बोलते हैं ना खून दो मतलब तो यहाँ पे सचमुच बाल बच गए Thank you. Karthik ka please go ahead व्हाट sorry that's a very good question sir that's a very good question there is a song that we have there are two songs in the film but ye jo last song jo aapne jo suna that's really the thematic idea of the film which is kya khoya kya paya and which is one of the beauties about Hindi cinema कि you can actually speak about the philosophy of the film through song and I believe in that kind of usage of song and I love songs in Hindi cinema so the last song in some ways what happened was that it was meant to be a different song and then one day Karthik said सर वो जो आपने जो नीरजा में किया था ना वो जीते हैं चल ऐसा कुछ गाना करते हैं सर ऐसा कुछ गाना करते हैं and so actually I must say he was the person again who motivated us to do a song that is in a way that tells you what the film is about which is in the climb of life and the ambition of life in the ladder that you have to climb how much will you lose how much will you gain and Puneet Sharma who's the lyricist who's not in town today others would have been here and he's my co-writer so he's the person who's written the lyrics outstanding lyrics and an outstanding song done by Vishal Khurana who's done the music for the film also he's also done the Nirja music so that's basically but thank you for asking that question और उससे हमने ये पाया चीज़ कि हम पिक्चर में गाना भी है सर आपने जो कार्तिक के बारे में बताया आई जस्ट लाइक टू ऐड टू दैट कि बाकी चीज़ों में भी जो उन्होंने ऐड किया है जैसे कि फॉर एग्जांपल अंकिता का एक बहुत वो हमने नहीं तय किया था कि वो स्मोक करेगी वो हमने तय नहीं किया था इट
it came from Karthik and it added so much to the character. मुझे ये वो याद है कि वो आते ही उसका character establish उस चीज़ से हो जाता है. So I'm really thankful for that. जी सर थैंक यू अमृता. हाँ सर सॉरी. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. उस टाइम कुछ विजिटिंग हम लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि लॉकडाउन में थे जब ये प्लानिंग चल रही थी. एंड उससे ज़्यादा हमने जूम कॉल्स में काफ़ी ऐसे ऑफ कोर्स मैं नेम बट मैं काफ़ी ऐसे लोगों से बात की थी या रिपोर्टर से. मैं शुरुआत में फिल्म में एक आरजे भी प्ले कर रहा हूँ जैसा कि आपने देखा तो. एंड वो चेंज टू वो अपना रिपोर्टर जो पहले हुआ करता था उस वाले सेंस में आता है. तो वो एक तो रेडियो जॉकीज उनके साथ बातें की. जूम कॉल्स होने लगे थे. ऑफ कोर्स लॉकडाउन में सबके काम जूम कॉल्स पे होते थे तो इसमें भी वही हुआ था. जो भी वर्कशॉप थी जो भी बातें थी जिसका भी इनफैक्ट जो जब रेडियो वाला हमारा जो रेडियो जॉकी रूम था उसमें क्या बटन्स क्या चलते हैं या कैसी जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं उसके बारे में सब जूम कॉल में ही मैंने विजिट किए थे. न्यूज़ रूम्स चाहे रेडियो स्टेशंस तो उनके वीडियोस वहीं पे देखे थे. एंड दैट्स व्हाट वी डिड आई थिंक विथ रिपोर्टर्स आल्सो, टीवी रिपोर्टर्स आल्सो. उनके साथ भी काफ़ी मेरी वर्कशॉप्स और काफ़ी बातें हुई थी कि किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं या किस तरीके से वो बात करते हैं. तो ये बहुत हुआ था शुरू में. But this is only to get a sense of realism and truth because that's the way that we shoot and the way we work. Yeah. But having said that, the film is not about journalism. That is just the backdrop. I just want to repeat myself. Have I said that before? It's a human drama film about a man who is ambitious. Did I say that? Hi, Karthik. Hi. Hi, sir. Hi, Hi. everyone. Hi. Russell here from Hi, Russell. Bollywood Life. So, first of all, huge round of congratulations. It's seriously looking amazing. Oh, Tight, it's so- taut. Thank you. My question is that from the time the film was announced, there was, we have come to know that it is probably loosely based on the Korean film The Terror Life. Now, there was a time when Hindi cinema used to blatantly make a lot of movies based on Asian films or Hollywood films, and nobody came to know about it, and it was almost like a get out of jail card because you had a ready, sure shot mode of success. But now, with the world coming closer because of OTT and everybody knowing things, is it become a riskier proposition to remake other films because people already have access to it before watching this film as opposed to before? I would like both of your thoughts on it. How many times have you seen the Ramayana? How many times have you seen Shakespeare plays? There are Plenty some of times. stories, yeah, so it's okay. I think that there are some stories that are worth telling, and they're worth telling again. And I think that those adaptations, as long as they are culturally rooted, as long as they make sense within the time that there is, as long as there is a job that we're reaching out to newer audiences, thanks to Netflix actually also, to allow us to reach out to a whole new generation of audiences. So I think that we don't look at it like that. I think you yourself, when you're watching whatever that you have watched in the past, in fact, there's perhaps a sense of excitement about saying, yaar, we want to see this. And also it depends not so much on the adaptation, but whether it's a good adaptation or a bad adaptation. We are hoping that we made a good adaptation. So, and we are hoping that we have respected the work that has come to us. But having said that, it is very different from what it was. So, Karthik, do you want to? Yeah. सर आई थिंक मतलब यही मैं यही है जो है मुझे लगता है एक फिल्म मेकर का भी एक नज़रिया आता है कई स्टोरीज़ को कहने का. एंड जिस तरीके से ऑफ कोर्स राम सर ने ये स्टोरी कही है वो काफ़ी इसमें एक अलग अलग डिटेलिंग भी है जो आई थिंक, और ऑफ कोर्स एक कल्चर का भी एक बहुत डिफरेंस आ जाता है कई फिल्मों में जब आप उनको इंडियनाइज कर रहे होते हैं या यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं या जिस तरीके से जिस सेटअप में यहाँ पे तो वो एक उस पिक्चर में गाना नहीं है. करेक्ट. उस पिक्चर में राम माधवानी सर भी नहीं है. पिक्चर में कार्तिक आर्यन भी नहीं है. उसमें करेक्ट.
बट बेसिकली हाँ वही है कि हर फिल्म मेकर का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कई बार एक ही वन लाइन भी हो सकती है कई बार और उसी पे अलग अलग फिल्म मेकर्स अलग तरीके से फिल्म बना सकते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर तो वो बस बात उतनी सी होती है Hi Ram, Sana from Indian Express here. हाय हाय You've of course repeated yourself that it's not based on journalism, but tell me what made you pick up a newsroom for this film? Does it add more sensationalism, as Amrita's character rightly says that hum news dikhate nahi bechte? Does the actor help you pick up a newsroom for Dhamaka? Is that question? हाँ It is that time for that question. Well, I think that first I could have set the film in the stock exchange, we could have set it in the film industry, we could have set it anywhere. And the original itself is set in a newsroom in any case, right? So there is no question of us doing any sensationalism or any of that. That's, like I keep saying, that really is a backdrop. And you will see that when you see it, you'll realize that that's just the backdrop. It's a human story. I'm saying that again, sorry about that. But it is a human story, and it's a drama, and it's about a fallen hero. In some ways, it's also a tragic story about a man who basically loses everything in trying to get everything. And so I think those are the things that, like, you can turn around and say Neerja was a hijack story. But it's not a hijack story, right? It's about a mother-daughter relationship. It's about a family. It's about what happens to you when you lose your child. And so there were many things there which were not that. Similarly over here, there are many things over here which are not that. And I think when you see the film, you will receive it as that. And therefore, like, even though we keep saying that that is just the backdrop, I think when you see it is when you'll believe it. So. Hi, Ronnie sir. Himesh this side from Pink Villa. Ronnie sir, Himesh this side from Can we Pink have Villa. last two Firstly, questions, congratulations to everyone. The trailer looks fantastic. थैंक यू महेश Thank you so much. That's जो भी आप कहते हो सच कहना. Such keh raha hu. My question is to Ronnie sir. Sir, I remember in May 2020, when the pandemic had just started, you said that the theatrical business will take some time to get back. You said that it will be the second half of 2022 when things will get back on track, and that's exactly what is happening if you look at things now. As a producer, how do you look at the future of Indian cinema in terms of bifurcation of content? Because we see your slate and we see a clear bifurcation between theatrical content and OTT. So how do you view the future of Indian cinema in terms of content? I believe Dhamaka was also always conceptualized as an OTT film from the start. So is that something you see happening frequently? See, I think in storytelling, there's no such thing as an OTT film or a theatrical film from an audience point of view. And I don't think there's see, the overall problem here that everyone feels is there's a time of pre-theatrical and post-theatrical, and that's not the case. I think as technology comes about, everything comes and actually joins hands over a period of time. So I would say we've got a lot of time. I think when I said that in 2020, it was only an expectation because everyone was still releasing and making release dates announcements. I think if you look at, as all of us are trained to do as producers, directors, actors, is first to understand what does the consumer want to see, what does our audience want to see, and what are the trends happening. So I think if you follow your consumer, you follow your audience, you get your answers much faster than that. That's something that I've strongly believed in from the beginning of time. And I think today, OTT overall has actually got a phenomenal push because of the element of pandemic, but they would have managed in any case. So I think even today when we're doing many other things, the future of storytelling will not change because audiences will want to hear engaging stories. They'll want to go to the movie theaters for what they want to see, which is very visual. And the fact of the matter, the beauty of OTT is you can watch at any time you want. And the element of OTT success has always been binge watching, right? So I think those are very, very different audience trends. And I think it's just natural for it to happen.